Hello dear students, very warm good evening to all of you. So yesterday we started with this chapter, motion in a straight line, in our series of physics classes, the first chapter of class 11th. कल हमने start किया था. Yesterday we learned about distance and displacement, frame of reference, what is a point object, what is kinematics and other things. So I told you that in the next class we will practice some of the questions. So okay, I'll just give some of the questions and then we will start with our new topic, which is speed. Today we'll discuss about speed. Okay, so the first question, the question which we did yesterday, does anybody remember? I asked you the numerical ratio of distance to displacement for a moving. Let me just show you. I'll have that also. Yeah. The ratio between distance and displacement. First option, always equal to 1, less than 1, and D, equal to or greater than 1. And what was the reason behind it? The simple reason was that distance can never be lesser than displacement. Distance can be equal to displacement, but can never be less than, because distance is defined as the total path length. Distance में आप क्या define करते हो? Total path length of the path that you have traveled. Whereas in displacement, you define as the shortest distance between the initial and the final positions. So based on this fact or this theory, this question was there. Now we'll carry on and we'll do some new questions. Okay, we can do it here only, no need to go there. Let me add some pages for you. Yeah, so it will be really great if you guys also note down these things along with me. Okay. फिर इससे क्या होगा कि क्लास नोट्स आपके साथ ही प्रिपेयर होते रहेंगे. ये वाले नोट्स जो हैं यू कैन जॉट देम डाउन, अदरवाइज विल शेयर देम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. यू कैन जॉइन दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड. Otherwise you can make your own notes. Either way is comfortable to you. Okay, so the next question is, it's also a very easy question and straightforward question. Whatever we discussed about displacement yesterday, it's directly based on that. Question says, which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? Which of the following कैन बी जीरो? पे अटेंशन, ध्यान से पढ़ना. इनमें से वो कौन सी क्वांटिटी है, जो भी मैं क्वांटिटीज लिखूंगा, जो कि जीरो हो सकती है व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम. जब एक पार्टिकल कोई सर्टेन टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म करके आया. अब मोशन का हमें वो नहीं बता रखा स्पेसिफिक डेफिनेशन की किस तरह का मोशन है, बट ये बताया कि एक पार्टिकल कुछ मोशन कर रहा है, ये सर्कल में रोटेट कर रहा है या स्ट्रेट लाइन कर रहा है. दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. ओके, बट आपको क्या लगता है अपनी समझ से, इसका आपको जवाब देना है. एंड द ऑप्शंस आर डिस्प्लेसमेंट, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, कि कोई पार्टिकल थोड़ी देर तक मोशन में रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. ओके, देन डिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन. थर्ड वन आई विल गिव यू एज स्पीड, एंड द फोर्थ वन आई विल गिव यू एज none of these. So what do you know about distance and displacement? Distance is the total path length of total path length that the object has traveled. तो एक जनरली अगर आप इस डेफिनेशन से सोचोगे कि भाई डिस्टेंस का मतलब सर ने बताया था टोटल पाथ लेंथ, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्टिकल मोशन करके आया और उसकी टोटल पाथ लेंथ ही जीरो हो, है ना? इसका मतलब अगर टोटल पाथ लेंथ ही जीरो है तो पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस चला ही नहीं, तो उसने किस तरह का मोशन किया? फिर तो वो रेस्ट पे ही था. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इन इफ यू परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ मोशन. इफ यू अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ मोशन, योर डिस्टेंस कवर्ड कैन नॉट बी जीरो. कैन योर स्पीड बी जीरो? इफ योर स्पीड इज जीरो, हाउ आर यू परफॉर्मिंग अ मोशन? इफ यू आर इन मोशन, यू विल हैव अ सर्टेन स्पीड. ऐसा तो है नहीं कि आप भाई बैठे बैठे कोई मोशन कर देंगे आप, नहीं ना. आप जिस भी आप ये जनरली सोच करके देख सकते हैं. मोशन इज व्हाट?
displacement or you know what, shifting location. कल हमने क्या बताया, how will you say whether the thing is in rest or motion? If a object is in motion, then it is changing its position with respect to the observer along with time. ठीक है, समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. इफ यू आर चेंजिंग योर पोजीशन, दैट मीन्स यू डेफिनेटली हैव सम स्पीड. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो. कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? थिंक अबाउट दिस. कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? What was the displacement definition? The shortest distance between 2 points. The shortest distance between 2 points. Suppose if I say कि मैं A point से चला, A point is my home. Okay. Suppose if I say A point से मैं चला and I went to this B point. B point is my school. Okay. And the distance between my home and school is 10 kilometers. Okay. So in the morning, 8 a.m. I went to school. Okay, I reached at 8:45. Then I attended the school till 2 p.m. And then at 2 p.m. I traveled back again and reached home at 3:45 p.m. Okay, and again I traveled a distance of 10 kilometers. Now, what is my total distance in this journey? If I'll ask you, what is my total distance in going from home to school and then back to home from school? You will say, sir, in the morning you travel 10 kilometers. In the evening you travel, afternoon you travel 10 kilometers. So the total distance will be 10 plus 10, 20. And I said, all right, 20 is the correct answer. What about displacement? What was my starting point? So your starting point was point A, your home. Okay. What was my ending point? Sir, ending point was your school. You reached your school. But here you will be wrong if you say school, because I went from home to school. देखो, घर से school तो मैं गया. But what I did, I returned back from school to home at 3:45 p.m. So according to 3:45 p.m, what is my final point? My final point is again A, again my home. मैं वापस लौट के अगर घर को आ गया तो मेरी final position, मेरी initial position same हो गई. And remember, किसी भी ऐसे केस में, in any case, if your initial position is similar to your final position, your displacement will be zero. So it is possible कि आपने कुछ motion किया हो, you must have traveled some distance, but if you have traveled from point A to point B, but you traveled back again to point A, so after traveling back, the distance between your initial point and final point becomes zero. So your displacement is zero in that case. So displacement will be zero. I hope everyone understood this question. If you want, we can do some more questions. Very similar question to this only. These all are theory based questions. I will give you a numerical as well, don't worry. If distance covered by a particle, please write down with me. If distance covered by a particle is 0, then what can you say about its displacement? First option, displacement, it must be 0. Second option, it can not be 0. Third option, it may or may not be 0. And fourth option is can't be determined. Can't be determined. You cannot determine the displacement of the object just by knowing how much distance it has traveled. Okay, so data insufficiency you can say. अब कॉमन सेंस से सोच के देखिए, अगर
आई एम सेइंग दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज जीरो. डिस्टेंस कवर्ड मैंने आपको बताया था हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा. इफ द डिस्टेंस कवर्ड इटसेल्फ जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? इन एनी केस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. So displacement will be equal to distance in this case, and displacement will also be zero. So according to this, which option will be correct? Option 1, it must be zero, will be correct. Okay. Okay, so more questions for you. एक न्यूमेरिकल भी लाया हूँ मैं आपके लिए, वेरी इजी न्यूमेरिकल, वेरी इजी. We'll do it together. Let me add one more page for you. Okay. And yeah, here we go. Do I have a new? Okay. A drunkard is walking. Okay, write with me. A drunkard is walking. This question has already came. So this is a previous year question. Along a straight road, ठीक है. Drunkard basically somebody what's a drunkard? Drunkard basically is somebody who is not in his senses because he has taken too much alcohol. Too much alcohol. You know, if you consume too much alcohol, you will not be in your senses. Even you cannot walk properly. Okay. देखें अपने लोग जो ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल लेने के बाद टेढ़ा मेढ़ा चलने लगते हैं, बिकॉज यू इट डज इट अफेक्ट्स योर मोटर एबिलिटीज. ओके. So yeah, so he takes 5 steps forward, 5 steps forward, and 3 steps backward. 5 steps forwards and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long. Each step is 1 meter long, and it takes 1 second to take 1 step. 1 सेकेंड में 1 स्टेप चलता है और 1 मीटर लॉन्ग चलता है. ठीक है. नाउ देयर इज अ पिट. पिट समझते हैं आप? गड्ढा ऑन रोड. $11 meters away from him. So you have to calculate the time after which he will fall in the pit. पूछे सर क्यों गिरेगा? गिरेगा ही गिरेगा ना, उसको होश नहीं है, अगर पी के चल रहा है गिरेगा ही बेचारा. कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही विल फॉल इन द पिट. तो आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है. कैसे करोगे? सर 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे आता है, तो यानी 2 कदम नेट आगे बढ़ा रहा है. 5 कदम चलने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड. 3 कदम वापस आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड. तो टोटल 2 कदम चलने में कितना टाइम लगा होगा उसको? सर 8 सेकंड्स. ऐसा कुछ सोचो. हिंट दे दिया मैंने. टेक आई विल गिव यू 30 seconds टाइम. Try to solve this question. I'll wait for you guys. 30 seconds.
Come on. Yes, come on, time up. Very simple answer, 29 seconds. Okay, a few students have answered that. Okay. कैसे कैलकुलेट किए 29 सेकंड्स, जिनको नहीं समझ में आया, I'll give you an explanation. The same thing जो मैं आपको बता रहा था. He takes 5 steps forward. Okay, he moves 5 steps forward. 5 steps forward and 3 steps backward. Means net 2 steps forward. In how much time? 2 steps forward in 8 seconds. You know how this 8 seconds have come? देखो 5 स्टेप्स आगे चलेगा, 5 स्टेप 1 मीटर के होंगे, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगाएगा, तो 5 स्टेप चला तो कितने सेकंड चल रही है? ऑलरेडी 5 सेकंड्स तो यहाँ चल लिया. फिर 3 स्टेप पीछे आया, तो 3 स्टेप पीछे आएगा मतलब 3 मीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा उसका, तो 5 मीटर आगे चलेगा, 3 मीटर पीछे आएगा, तो नेट कितने मीटर चलेगा? 2 मीटर. ओके, सो 2 मीटर इन 8 सेकेंड्स, क्योंकि 3 सेकेंड वापस आने में भी लग गए, तो 5 और 3 8 सेकेंड्स. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 2 मीटर. हमें कितना जाना है? 11 मीटर जाना है, ठीक है. तो 8 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 16 सेकेंड्स में 4, देन 24 सेकेंड्स में कितना? 6 मीटर. तो अब देखो 24 सेकेंड्स में, एट 24 seconds he has covered 6 meters. Now he will walk what? 5 steps forward. 5 steps forward चलेगा तो 6 meter. He is standing at 6 meters. If he'll take 5 steps forward, each step of 1 meter, total he'll walk 5 meters. So 6 plus 5 is your 11 meters. That's what he'll fall in the pit. 11 मीटर दूर ही तो है pit. 11 मीटर दूर ही तो है. The pit is only 11 meters far. So now this time there is no coming back. Standing at 6 meters, 6 मीटर पे खड़े खड़े, if he walks 5 meters ahead, then he will directly fall into the pit. There is no coming back, no back steps. So 6 plus 5, 11 meters. Okay, and the seconds will be 24 plus 5 seconds. The 5 seconds of 5 steps, which will be your 29 seconds. That's how you solve it. I hope this question is also clear to everybody, right? Okay, so we can move on to our next topic, I believe now. Yes? Okay, all right. We'll move on to our next topic about speed. Now, what is speed and how do you calculate it? What is the meaning? What is the unit and other things? We'll study about speed. ऐसा तो नहीं है कि आपने speed word पहले कभी सुना नहीं होगा. You all must have came across this word speed, okay, from your class 7th, 8th and so on. So you all know what is the meaning. Speed simply means how fast you are traveling, how fast you are covering the distance. So distance covered per unit time. How fast means fast is in the respect टाइम. अगर कितनी तेज चल रहे हो या किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ऑब्वियसली दो चीजें आएंगी स्पीड की डेफिनेशन में, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम में किया. सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला होता है स्पीड कैलकुलेट करने का. दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम बेसिक सेंस.
if I'm saying that I walked 10 kilometers and in 1 hour, so how will it calculate my speed? Simply you will divide the distance that I've covered from the time which I've taken. So 10 kilometer divided by 1 hour or 60 minutes. 1 hour is comfortable. So if you divide by 1 hour, you will say that sir your speed was 10 kilometer per hour. Speed in 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स दैट पर आवर यू आर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स. हर एक घंटे में आप 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, ये आपकी स्पीड है. तो सिंपल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्पीड कैन ओनली बी डिफाइंड विद द मैग्नीट्यूड. अगर आपको किसी को अपनी स्पीड बतानी है तो आप सिंपल बोलोगे आई एम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. दैट्स इट, कंप्लीट डेफिनेशन है. It's need not to necessary that you say that I am traveling with 20 किलोमीटर पर आवर towards east. आप किसी को अपनी स्पीड ऐसे तो नहीं बताते. स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी में, उसमें आपको स्पीड के साथ डायरेक्शन दिखती है क्या? नो. द स्पीडोमीटर इन द कार ओनली शोज यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन, है ना. 20 का गैप होता है उसमें, बट या सो ऑन. Digital speedometers also, they only express your speed in kilometer per hour and no direction is added to it. So that means speed is a clear quantity. It does not need any direction to specify it completely. Whereas on the other hand, velocity is a vector quantity. We will read in the coming slides about velocity as well. तो units देख लो. unit मतलब आप किन units में define करते हो. तो speed को आप सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर किसी में भी डिफाइन कर सकते हो. तो स्टैंडर्ड units आपकी मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर होती हैं. वैसे आप किसी में भी डिफाइन कर सकते हो, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, है ना, इन एनीथिंग. कैसे यूनिट बनाओगे आप? डिस्टेंस जिस भी यूनिट में ये मैंने अपॉन टाइम, सेकेंड्स में ले लो, मिनट्स में ले लो, आवर्स में ले लो, योर विश. नाउ on the right hand side you see this small flow chart. Speed is divided into two different aspects. There are two different aspects of speed. I should say the types, है ना. aspects तो फिर भी not correct, but types. So types of speed are average speed and instantaneous speed. What is the simple difference between instantaneous speed and average speed? We will see maybe in the next slide or so. Okay, yeah. Average speed of a particle over a certain time interval is defined as the ratio of path travel to the time interval. क्या समझ में आया इससे? ऐसा कुछ का समझ में आया? देखो मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूँ. उन्होंने क्या बोला? एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल over a certain time interval. ये जो over a certain time interval, and this is the only important thing in this whole definition. Over a certain time interval is the only important thing. Average speed is the speed which is defined over a certain time interval. Okay, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी स्पीड जिसको आप ऐसे बता, जैसे आपने 2 घंटे ट्रैवल किया from Delhi to Mumbai. Okay, you have traveled from Delhi to Mumbai. It took you 2 hours to travel, and you have traveled a distance of, let's say, 60 kilometers. Okay. So in this 60 kilometers, at every 1 kilometer, 2 kilometer, you must have changed your speed. Okay, at suppose when you were at 5 kilometers, your speed was 50 kilometer per hour. When you reached 20 kilometers, when you covered a distance of 20 kilometer, your speed reduced to 30 kilometer per hour, and so on. There would have been variations. So आप किसी से आपको पूछेगा when you have come from Delhi to Bombay, somebody will ask you what was your speed during the journey. So will you tell him, okay, at 5 kilometer I was this, at 10 kilometer my speed was 20 kilometer per hour, at 30 kilometer my speed was 90 kilometer per hour? Not like that. आप उसे कैसे बताओगे पूरी जर्नी का? So when you tell the speed for interval of time, okay, certain time interval, okay, then it is average speed. कि किसी बड़े टाइम इंटरवल के लिए जब आप स्पीड डिफाइन करते हो, दैट इज योर एवरेज स्पीड. ओके, दैट जैसे बहुत आपको देसी में बताऊं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मोटा मोटी आप लगा लो कि मैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से आया हूँ. तो वो जो देसी में आप बोलते हो ना लगभग, मोटा मोटी ऐसे लगा लो, आसपास मान लो. उस सब का मतलब क्या होता है? एवरेज. उन सब का मतलब होता है एवरेज इतना पकड़ के चलो, बाकी तो वेरी कर रहा था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड रही होगी, बट एवरेज आप मान के चलो कि 2 घंटे में मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी. तो एवरेज का मतलब क्या है? एक सर्टेन टाइम इंटरवल के दौरान जो आपकी डिफरेंट स्पीड रही हो उनको डिफरेंट ना बता करती एक सिंगल वैल्यू बताना. तो सिंगल वैल्यू इज योर एवरेज स्पीड फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. निकालते कैसे हैं? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर. कितनी देर में? 2 घंटे में. तो 60 अपॉन 2, एवरेज स्पीड कितना आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर. वेरी सिंपल.
कुछ लिख नहीं रहा हूँ मैं, आई एम ओनली स्पीकिंग एंड आई फील दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. I told you Delhi to Mumbai it took me 60 kilometers. So what is the total distance traveled? 60 kilometers. Total time 2 hours. So 60 upon 2, 30 kilometers per hour will be my average speed throughout the journey from Delhi to Mumbai. चलें आगे. Instantaneous speed. Now exactly opposite to your average speed is your instantaneous speed. Exactly opposite to your average speed is your instantaneous speed. How exactly opposite sir? ऐसा क्या exactly opposite है इसमें? इसमें ये exactly opposite है that in the average speed you were defining it for a long interval of time, है ना? एक लंबे time interval के लिए आप define कर रहे थे. Instantaneous speed is at the particular instant. जैसे what the speed which you see in your speedometer in your car is your instantaneous speed. It is not your average speed. Okay, when you're traveling on highway, you accelerate the car, the speed increases to from 20 kilometers or 30 kilometers to 70, 90. Okay, so that increase of 70 kilometer, 90 kilometer per hour at a particular instant is your instantaneous speed. सिंपल मतलब जब मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछ लूँ कि आपने से ट्रैवल किया 10 बजे से रात को गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और रात 11 बजे तक गाड़ी चलाया, ठीक है, 1 hour you have driven a car for 1 hour, but I specifically asked you what was your speed at 24 minutes and 35 seconds. That is a very specific time interval. उस टाइम कितनी स्पीड थी? How will you tell what was my speed at 24 minutes and 35 seconds? By looking at the speedometer of your car. आपके स्पीडोमीटर में कार की जो स्पीड आ रही होगी 24 मिनट और 35 सेकंड पे, वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे पूछी गई स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है. ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे? लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड ds/dt. डिफरेंशिएशन आता है, we'll tell you that also, don't worry. डिफरेंशिएशन भी आपको सिखा देंगे अभी. हाउ डू यू कैलकुलेट द instantaneous speed? You simply differentiate the given average speed with respect to the specific time interval. You will put the value of the time interval, you will get your instantaneous speed, ds/dt. Okay, you must have learned this differentiation in your basic mathematics class. Okay, if I'm not wrong, you can check out the lecture as well in the playlist, the basic mathematics class, if you have not attended. We have covered differentiation there, and I'll also make you revise this thing. Okay, just read the definition once of instantaneous speed and then try to think about the difference which I have just told. Try to note it down and then we will move ahead. I'll give you 50 seconds to do this work. Just read the definition once, compare it with the average speed and write whatever you want to write in your notebook and we'll move ahead. Okay. You guys need more time? I hope everybody has written down by now. Okay. We'll talk about velocity now. What is velocity? We were defining speed with respect to the distance. अभी देखा ना आपने, जहाँ भी मैं स्पीड की बात कर रहा था, डिस्टेंस हर जगह डिस्टेंस बोल रहा था, बट वेलोसिटी के केस में क्या वर्ड है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज टू अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू विल डिफाइन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल पॉइंट एंड योर फाइनल पॉइंट ऑफ योर डेस्टिनेशन. जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको कहलाएंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपली.
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी पार्टिकल की, उसको आप टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यू विल आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन. Okay, when you're talking about the velocity of the particle, you will not say that the velocity of particle is 30 km per hour, because that is speed. You have to tell direction also. So velocity of the particle will be 30 km per hour towards east or towards west or towards north. You will specify a direction. Where is the velocity 30 km per hour? In which direction? In which direction displacement is taking place? Okay, so you have to specify the direction. That is why, remember, velocity is a vector quantity. Okay, now you can see the flow chart showing the types of velocity. Average, instantaneous, the same difference which was between the average speed and instantaneous speed, जो उनके बीच में difference होता है वही same average velocity और average instantaneous velocity के बीच में भी होता है. The difference between average velocity and instantaneous velocity remains the same as between average speed and instantaneous speed. The two new terms which you see here are uniform velocity and non-uniform velocity. ये दो नई terms आपको देखने को मिली हैं. So we will read about uniform and non-uniform as well. And I'll quickly just go through your average velocity and instantaneous velocity part. Okay. Yeah. So the direction of the velocity vector is easy to find. Its direction is same as the direction of the moving object. I just now told you velocity vector की direction आप कैसे बताओगे? The direction in which your displacement is taking place is the direction of your velocity vector. ठीक है. Now what is a uniform velocity? Uniform velocity क्या होता है? An object, read the definition with me. An object is said to move with uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time, and it does not matter how small these time intervals may be. Okay, suppose if I say a student is getting displaced by 2 meters by every second, every successive 2 seconds, let's say. In every successive 2 seconds it is getting displaced by 2 meters, starting from 0 meters. 0 meter पे एक student खड़ा था. Okay, if I have a page, I can give you a demonstration of this. I'll add a page here. Okay, suppose this was 0 meters and this is 2 meter, this is 4 meter, this is 6 meters, this is 8, this is 10, this is 12 and 14 and 16 and so on. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 in meters. Okay, these are the positions from this origin point. Okay, this is your starting point, your origin. Now if I am saying a boy is standing at 0 meters and it travels 2 meter in 2 seconds. It again, from 2 meter it travels again 2 meters and reaches what? 4 meter, and it takes another 2 seconds for him. Similarly, from 4 meter to 6 meter is again a distance of 2 meter, and it again takes him 2 seconds. So you see, he is moving 2 meters in every 2 seconds. Okay, in 2 seconds he is moving 2 meters. So that displacement in every 2 seconds is same. That is 2 meter displacement in every 2 seconds. Displacement is same, and the time taken to cover this displacement time is also same. It is also 2 seconds. So what will your velocity? 1 meter per second. Because the velocity is what? Displacement per unit time. And is this velocity uniform or non-uniform? This velocity is uniform, and why it is said uniform? Because in equal intervals of time, equal distance is getting covered in each successive 2 seconds. In from 0 to 2 seconds, then from 2 to 4. Okay, I'll just need an eraser here. Okay, so from traveling from 0, you were at 0 seconds, you were at 0 meter. At 2 seconds, you were at 2 meter. At 4 seconds, you were at 4 meter. At 6 seconds, at 6 meter. At 8 seconds, 8 meter. 10 seconds, at 10 meter, and so on. So you see, you are covering
equal distance of 2 meter every time in equal interval of time. Equal interval of time is we have selected of 2 seconds. ठीक है, we have selected an equal time interval of 2 seconds and the distance covered is 2 meters in each successive time sequence. So this type of velocity is uniform velocity, where the displacement covered by the particle is equal in equal intervals of time. You get it? So this is uniform velocity. This type of velocity is called uniform velocity. I hope everybody has understood the meaning now. You can again read the definition. When a particle covers equal displacement in equal intervals of time, it is said to have uniform velocity. Now what will be non-uniform? When you don't cover equal distance in equal interval of time. Okay, when time intervals are equal 2 seconds, but the distance you cover in the first 2 seconds is 3 meters. The next 2 seconds you cover 10 meter. In the next 2 seconds you cover 20 meters. So the distance you are traveling is not equal in each successive time interval, in each successive equal time interval, because time interval still is of 2 seconds, but your distance covered is displacement is not same. Your displacement is different in each equal time interval. So that is your non-uniform velocity. Okay. And yes, now instantaneous velocity, as I told you, is defined as the ratio of the displacement to the time interval at that particular second. Instantaneous velocity is the velocity at a specific time interval. Okay, so that ds by dt is the same formula is for velocity also. Okay, the difference between speed and velocity is only that velocity has an direction associated with it when you are defining it. Okay, और कोई फर्क नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, बस एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट. आप किसी भी पाथ पे चल रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए एंड द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Okay, and basically instantaneous velocity is defined as the instantaneous rate of change of position with respect to time. ठीक है, that is the velocity at that instant. कि एक particular instant पे किस rate से position change हो रही है time के respect में, that is your instantaneous velocity and nothing more than that. So these definitions we have already studied in the instantaneous speed. All things are same. Okay, so you can just go through them by yourself. I'll just move ahead and summarize this slide for you. Instantaneous speed of a particle is the magnitude of instantaneous velocity. ठीक है, basically instantaneous speed क्या होगा? Instantaneous velocity का magnitude, because I told you velocity is magnitude plus direction and speed is only magnitude. तो अगर मुझे velocity से speed निकालनी है, if I want to extract out speed of a particle from the velocity of the particle, I will simply extract out the magnitude of the velocity. That will be my speed of the particle. Velocity का जो magnitude होगा उसे बाहर निकाल लो, वो particle की speed बन जाएगी. सिंपल सी बात ये. ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? If the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of the displacement is equal to the total path length. अगर कोई object straight line में motion कर रहा है, ठीक है, if the motion of an object is along the straight line और एक सीधी डायरेक्शन में in the same direction, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल. टोटल पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है. तो वो ये कहना चाह रहे हैं अगर आप एक सीधी रोड पे चल रहे हो बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो सेम आएगा. दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल थिंग. ठीक है, and in that case when the magnitude of your displacement and distance is equal, the magnitude of average velocity is equal to average speed. Because देखो average speed और average velocity की definition में difference क्या है? Average speed को हम define करते हैं total distance upon total time. Average velocity को how do we define? Average velocity we define as total displacement upon total time. The difference in the definition is of only distance and displacement, and the only condition which was different in these definitions
was the word distance and displacement. And if I am saying that when you move along a straight line without changing your direction, your distance and displacement are equal, so your average velocity and average speed are automatically going to be equal. ठीक है ना? जब मैंने बोल दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? सो दैट इज द केस. ओके, uniform velocity no, and uniform speed and average velocity, yeah. Crash course and all we have launched. About average velocity, yes, I think about average velocity we can learn from the next class. Okay, about this thing, average velocity is I told you almost same to the average speed. You can read the definitions also, you won't find any difficulty in understanding them. कोई परेशानी नहीं आएगी, पढ़ के देख लेना. एवरेज वेलोसिटी देखो क्या लिखा है, ऑफ अ पार्टिकल ओवर सर्टेन टाइम इंटरवल. देखो सबसे पहली बात, आप एवरेज को डिफाइन करते हो ओवर सर्टेन टाइम इंटरवल. यही फर्क होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, और कैसे डिफाइन करते हो, रेशियो ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल. और एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. दैट इज द ओनली डिफरेंस. डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन बनेगी. सिंपल सी बात. ठीक है, और देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द ट्रिप स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, जो अभी हमने डिस्कस किया. व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड गो टू योर स्कूल एंड फ्रॉम द स्कूल यू रिटर्न बैक टू योर होम, सो द इनिशियल एंड योर फाइनल पॉइंट इज योर होम ओनली. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. सो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. अगर आप की ट्रिप स्टार्ट करते हो जहाँ से, आप वहीं पे आकर के अपनी ट्रिप एंड भी कर दोगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो है, इसीलिए आपकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब जीरो अपॉन 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो ओनली, है ना? दैट इज द केस देयर अबाउट एवरेज वेलोसिटी. आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड the things which we discussed today, the numericals, then the speed, the difference between average speed, instantaneous speed, then average velocity, instantaneous velocity, uniform velocity, non-uniform velocity. Okay, so these things I hope you all have already gone through, and in the next class I'll try to find some good questions for you from these topics. We will solve keep revising these topics. Okay, come revise in the next class, and I'll find some good questions for you, and we'll do the questions together, and then we'll move to the next part, which is acceleration and the equations of uniform motion. Okay, about graphs as well, we'll do graphs, don't worry, graphs bhi honge, kinematics graphs we will do. Okay, so students, come back in the next class with proper revision. We'll solve some good questions. Okay, thank you everyone for joining the live stream.